A very good morning, students. So, today we are going to start Histories, chapter number 3, Nazism and the Rise of Hitler. So, here, a student, in this chapter, firstly, I will introduce you. I'll start from the introductory part of this chapter. So, here, a student, first of all, we should know what is Nazism, and the second one is who is Hitler. And third question I have, why we are studying this chapter. So then we will get to know about Germany and about the whole issue, First World War, and then we'll study about the Second World War. Then we will know about the problems. There were many more problems, some issues, and first is Weimar Republic. Second, we can say political conflicts, economic depression. So Hitler rise to power. Um, like we'll get to know all the powers spread of Nazism. Okay, Nazism means that was the ideology. Okay, and issues related to it. हाउ किस तरीके से जो है पावर जो है ये आई देर वर टू पावर्स एंड देन वाई दिस इज़ ऑल्सो अ क्वेश्चन एंड वाई ही डिड हिटलर ने ये सारी चीज़ें क्यों करी वो कैसे पावर में आए देन वी गेट टू नो अबाउट व्हाट वर द रीजंस हिटलर जो है कमिटेड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटीज़ एंड देर वॉज अ टैग threat to world peace and crime against humanity. So this was the introductory part of this chapter. So students, in this chapter Nazism and the rise of Hitler, will start from the background. Okay, background of this chapter कि कैसे यहाँ पर एक सिचुएशन जो है वो किस तरीके की सिचुएशन थी. एंड दिस इज़ द स्टोरी ऑफ हेलमुथ. दिस इज़ द टाइम पीरियड ऑफ 1945 का ये टाइम था. दैट वाज द टाइम व्हेन वर्ल्ड वॉर टू वाज कम्प्लीटली ओवर. देर वर टू पावर्स जो आपस में लड़ रहे थे. वन वॉज एलीज एंड अनदर वन इज़ एक्सिस पावर. बिटवीन दीज टू पावर्स एलीज जो है वो जो है वो जीत जाती है. ओके, दैट इज़ द विनर पावर. एंड एक्सिस जो है वो डिफीट हो गई है जिसमें जर्मनी एक कंट्री है. ओके, सो जो कि हार गई है. हेलमुथ्स फादर सेड टू हर वाइफ वी शुड कमिट सुसाइड या फिर वो अपने आप को क्या कर दे, मार दे. वाई, क्यों उन्होंने ऐसा कहा? बिकॉज वट दे डिड, वट एवर दे डिड, and the same thing allies will be do the same with them. Jews, allies ये क्या है? ये एक तरीके की वहाँ पे Jews जो है एक कम्युनिटी है. ओके, सो हेलमुथ्स फादर वॉज नाजीज. हेलमुथ्स के फादर जो है वो कौन थे? नाजीज. मीन्स दैट वॉज द पार्टी एंड ही वॉज फॉलोअर्स ऑफ नाजीज. He was the follower or supporter of Hitler. Helmut's scared when he heard about that. And then what happened in the next day? Their family went for a picnic with, for outing they went, and next day his father shot himself. हेलमुथ इससे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं एंड नेक्स्ट 9 years तक वो कुछ भी नहीं खाते. वाई? बिकॉज ही स्केयर्ड कि कहीं उनकी माँ उन्हें पॉइजन न दे दे खाने में. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट डज इट सेज अबाउट द सिचुएशन ऑफ दैट टाइम. It says that there was a atmosphere of fear. And why the situation was like that? And there were reason was a Nazis. Hitler जो है, जो Nazis were supporter of Hitler's, which I already said to you, told you. And their idea was to make Germany a mighty power.
ठीक है। और इसे पावरफुल बनाने के लिए हिटलर ने बहुत कोशिश की, उनके फॉलोअर्स ने, सपोर्टर्स थे, डिड अ लॉट, बट दे वर नॉट सक्सेसफुल। ज्यूस को प्रोसिक्यूट करना शुरू कर दिया गया, जो कि सेम कंट्री में एक तरीके की क्या है, एक डिफरेंट कम्युनिटी थी इन जर्मनी। ड्यू टू दिस वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है वो भी एक रीज़न है इसका होने का। सो देर आर मैनी रीजन्स स्टूडेंट। what happened after second world war, which was done in May 1945. सो स्टूडेंट्स, जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड का जो टाइम पीरियड है, इट वॉज 1939 टू 45. देर वर टू ग्रुप्स, वन वॉज एलिस एंड अनदर वॉज एक्सिस। एलिस में जो है, एलिस वॉज दिस ग्रुप वॉज, दिस पावर वॉज अ विनर पावर, एंड जिसमें आपके रशिया, फ्रांस, यूके, यूएसए जो है ये एक ग्रुप में थे। ओके, यूएसए थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। एंड इन द सेकेंड ग्रुप, दैट वाज एक्सिस ग्रुप, जिसमें आपके देयर वर थ्री कंट्रीज लाइक जर्मनी, जापान एंड इटली। ये एक लूज़र ग्रुप था जो कि हार चुके थे। सो जर्मनी जो है इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जर्मनी जो है वो सरेंडर कर देती है। एलिस ग्रुप जो है सरेंडर कर देता है। And then they establish international military tribunal, uh, Nuremberg. Through this prosecute Nazis war. There was a criminals, um for which was they got, इन्हें एक सज़ा सुना दी जाती है। वाई? बिकॉज ऑफ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। इन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा, लाइक इनमें से इन्होंने किलिंग ऑफ 6 million ज्यूज़, 60 lakh ज्यूज़, 200,000 जिप्सीज एंड 1 million पॉलिश सिविलियन। अब ये पॉलिश सिविलियन कौन है? जो कि पोलैंड के लोग, ठीक है, दोज हु वर लिविंग इन पोलैंड। एंड 70,000 जर्मन्स, जो कि जर्मन्स मीन्स सम ऑफ द पीपल वर अनडिज़ायरेबल, लाइक हैंडीकैप्ड पीपल, जो कि उनको लगता था हिटलर को कि वो उनका साथ नहीं दे सकते। एक्चुअली ही वांटेड दैट कि वो एक सेम रेस के पीपल को अपने साथ रखना चाहते थे। सो जो डिफरेंट कम्युनिटी के लोग थे उनको वो मार दिया गया। सो इतनों को मारने के बाद देर वर ओनली 11 लीडिंग नाजिस को जो है डेथ की जो है सज़ा सुनाई गई, बाकियों को जेल भेज दिया गया। नाउ वाई? बिकॉज देर वर ऑल्सो रीज़न बिहाइंड इट, क्योंकि जो यहाँ पे एलिस ग्रुप थे वो ये नहीं चाहते थे कि उनके साथ इतना ज़्यादा वो हार्श हो, लाइक इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सो दिस वॉज अबाउट द इंट्रोडक्शन स्टूडेंट, बिकॉज फ्रॉम हियर द होल स्टोरी बिगिन फ्रॉम दिस पोर्शन. Okay, so because the 20 years between the first and second world wars was a period of tremendous changes all over the world. Many development paved the way for the outbreak of second world war. So the seeds were sown during this period for the second world war. This period between 1919 to 45 saw the major economic crisis which affected the economy of almost every country. It saw the growth of socialism in almost all the countries of Europe. Okay, so students, in the next video we'll discuss about the birth of the Weimar Republic. So till then, thank you so much, student.